Hello guys. Okay. Hello guys. We'll continue with our Nceret series, and we are on the verge of completing our 10th standard Nceret. We will be studying about the agriculture, and I want to tell you that in 2021, also in 2022, they have, and even in 2023, they have asked many questions related to Indian agriculture. Okay, you can see on your screen. These are few examples whereby I can tell you that they have asked questions. Look, that the first question, which can see you, so you can see that the first question in NDA 1 2021, they had asked, in which of the following countries is intensive subsistence agriculture not predominantly practiced? That is the question. Okay, so the question is about the intensive subsistence agriculture. Okay, I have highlighted it. You can check. So they have asked, which is not. Again, here it is not. So it's very important. Not predominantly practiced. So in India, you know that we practice the intensive subsistence agriculture, right? In Japan also, in Indonesia also, but Canada, because Canada's population is very less. Canada's population is very less, and the geographical area is high. So they will not be practicing the intensive subsistence agriculture. Are you getting it? Look at the population of India, 140. Japan also, one of the most highest dense country. It is one of the dense countries in the world in terms of population. Indonesia is also, they have 25 crore of population. So they will not practice the intensive subsistence agriculture. So the answer will be what? Canada. Okay. So correct answer will be Canada. Okay. So I need to mark Canada. So that was one question from the NDA 2021. And this question can be attempted well with the help of NCERT. Okay. 10th standard, chapter 4 and 12th standard. You can see. Unit 5. So if we study this much, then we can easily solve all the questions. Okay. Second question, you can see, which of the following is not a feature of agriculture in India? Which of the following is not? Again, the question is related to agriculture in India, and it is not. Okay. Which of the following is not? Okay. Which of the following is not a feature of agriculture in India? So, subsistence agriculture is our feature. Pressure of population on agriculture is also our feature. Dependence on the monsoon is also our feature. So predominance is the answer. Okay, predominance of cash crop, because we do not have predominance of cash crop, but we have predominance of food crop. Remember that. Okay, so we have predominance of food crop like rice, wheat, etc. Are you getting it? So try to solve this. Again, the next question is, which of the following pairs of crop and product are correctly matched? So food crop is ragi, cash crop jute, like jute, sugarcane, tea, etc. are cash crops. Plantation crop is coconut. So all of the three are correct. So the answer will be C.
So this type of questions they have asked. Let me check if anybody has joined. So, okay. So we'll start discussing about the agriculture. Now I will read it for you. India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. Agriculture is primary activity which produces most of the food that we consume, besides the food grains. Now, look at this heading, types of farming. Okay, types of farming. First is one, and second is commercial. Okay, I'm just highlighting first so that it will be easy for you. Okay, now start. So types of farming. The first is subsistence farming, and second is commercial farming. In the primitive type of farming, this type of farming is still present in India. Okay, with the help of primitive tools like hoe and dow and digging sticks, etc., and with the help of family labor. It is the slash and burn agriculture. Okay, remember this name: slash and burn agriculture. Farmers clear the patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, okay, when the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil. देखो होता क्या है ना, आप कहीं फॉरेस्ट में चले गए और वहां पर आपने झाड़ वगैरह काट करके वहां पर इसको बोलते हैं स्लैश, आपने झाड़ वगैरह काटे, क्लियर किया उसको, और वहां पे आपने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, तो 2-3 साल आप वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, वहां पे अलग अलग टाइप के फूड क्रॉप्स लेंगे आप, लेकिन कुछ सालों के बाद, 2 से 3 साल के बाद, उसके अंदर की जो फर्टिलिटी रहती है, सॉइल के अंदर की फर्टिलिटी कम हो जाती है. ओके, तो आप क्या करते हो, आप वो पैच ऑफ लैंड छोड़ करके चले जाते हो कहीं और वहीं वहीं पे एग्रीकल्चर करते हो, और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वापस आते हो, तो देखते हो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो गई, फिर आप फिर से वहां पर क्या करते हो, एग्रीकल्चर करते हो. इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इज इट क्लियर? ओके, लेट अस मूव नाउ. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूम एग्रीकल्चर. ओके, it is a zooming in the northeastern state like Assam, Meghalaya, Mizoram, etc. Zooming, the slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico. It's known as milpa in Mexico. Okay. Then Conacu in Venezuela, Roca in Brazil, so known as Roca in Brazil, Masol in Central Africa, it's known as Masol in Central Africa. Okay. Then Ladang, okay, Ladang in the Indonesia, and Ray in Vietnam. So it will be called as Ray. Is it clear? So it's Ray in Vietnam. Okay. So try to understand this. It's milpa in Mexico, right? Then it is
Conaco in Venezuela, Roca in Brazil, Masol in Central Africa, Ladang in Indonesia, Ray in Vietnam. This type of questions are asked, okay, in the NDA exam. In India, this primitive form of cultivation is called bevar or dahiya in Madhya Pradesh. It's called bevar or dahiya in Madhya Pradesh. Is it clear? It's called bevar or dahiya in Madhya Pradesh. Podu or penda in the Andhra. Podu or penda in the Andhra Pradesh. Okay? Or common and brinja in the Odisha. Then it can be called as the Kumari in Western Ghats. Okay? Hill in Himalayan belt. Kuruva in Jharkhand. Try to understand and try to remember these names. These names are generally asked in exam. Okay? Now this was the question which was asked about the intensive subsistence farming. Okay? This type of farming is practiced in areas of high population. This is the trap. This is the trap. In areas of high pressure. It is a labor-intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. Though the right of inheritance leading to the division of land among the successive generation has rendered landholding sites uneconomical, the farmers continue to take the maximum output of the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is an enormous pressure on agriculture land. You know, due to fragmentation of land, क्या होता है, आप इमेजिन कर लो कि आपके पास दादा परदादा की 100 एकड़ की जमीन थी, फिर वो दादा के बच्चों में मतलब आपके फादर के भाइयों में बट गई 100 एकड़ के 25-25 एकड़ आपके अब्बू को आ गए, फिर आपके अब्बू को दो बेटे हैं, इमेजिन करो, अब वो 25 एकड़ फिर से 10-10 एकड़ हो जाएगा. अरे बात समझ में? तो वो इसको आप समझ सकते हो कैसा उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ. लेकिन इतनी कम लैंड रहने के बावजूद उसी पे एग्रीकल्चर करते हैं क्योंकि दूसरा कोई सहारा नहीं है पैसे कमाने का. आर यू गेटिंग? दैट इज द रीजन. देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात होती है. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग is the use of higher doses of modern inputs, that is what the HYV, high yielding varieties seeds. Okay, so high yielding variety seeds are important. Okay, so high yielding, if the question comes, because as I have discussed with you the questions, these were the questions which were asked. Okay, those who have joined late, they can see these are the questions which were asked. Okay, the first question was on intensive subsistence agriculture. Okay, question was, in which of the following countries intensive subsistence agriculture is not predominantly practiced? Okay, so that was the question that I had discussed. Now if you look at the options, one is India, another is Japan, another is Canada, and another is Indonesia. Now if I tell you from where this question was asked, the important thing for us is from where this question was taken, from which book this question was taken. So I need to go and I need to show you that they have taken from this. Look, here is the heading. This is NCERT, and here is the heading: intensive
subsistence farming. Okay, this is the title, right? Look at here. I will split the screen so that you could understand. Okay, okay, look at this. I'm unable to do, let it be. So this is the word intensive subsistence agriculture. Okay, and if I show you, here is the word intensive subsistence farming. So here is the answer. This type of farming is practiced in areas of high population pressure. Okay, high population pressure. Now if you look at the options, in India you have high population, in Japan you have high population, in Indonesia you have high population. Only country which remains with the low population is Canada. That's why I have given answer option number 3. And this is how they ask questions. Then another question they had asked in 2021 of NDA second, that which of the following is not a feature of agriculture in India? So again, this word you can see in NCERT. This is our feature. Pressure of population on agriculture. I can show you the line. Look. So now you can see here there is an enormous pressure on agriculture land. Same. That is the question. Pressure of agriculture on land. Dependence on monsoon. You can see that we have dependence of monsoon. If we have good rainfall, then only we can have what? The good production of the food, right? Otherwise, no. And then predominance of cash crop. No, we do not have predominance of cash crop, but we have predominance of food crop like wheat. Whenever you visit your villages, you will see that you have mostly the wheat, rice, jawar, bajra, this kind of foods taken, and not like tea, rice, jute. We do not take things like that. And the third question, which was related to the food crop, cash crop, and plantation crop. Now, look, here the word is intensive agriculture. Here again, it is subsistence agriculture, same. Then here you have cash crop. That crop is again repeated. So every question has some linkage. Okay, here this word is here. Okay, you can see this question was repeated here. Then cash crop is taken in the option. So this is how you need to understand. Okay, that's the reason we are studying farm, the chapter called agriculture, and we are studying the Indian agriculture. Okay, because yesterday we studied about the Indian physiography. After completing Indian physiography, Indian soils, the most important thing is Indian agriculture. That is the chronology in which we are going. Now we are talking about the commercial farming. This time they can ask about the commercial farming because they have already asked questions on subsistence farming. So the next question can be on the commercial farming. The main characteristics of this farming is the use of high dosage of modern inputs like HYV. HYV means high yielding varieties. हाई यील्डिंग वैरायटी किसको बोलते हैं? जब आप दो टाइप के सीड्स रहते हैं. एक ऐसे सीड्स रहते हैं जिनको लगाने के बाद कम प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर तुम दूसरे टाइप का सीड लगाएंगे जो साइंटिफिकली डेवलप होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, उसको हाई यील्डिंग वैरायटी बोलते हैं. अगर वो आप लगाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होता है. ओके, क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेस किया रहता है. दैट इज द रीजन वी कॉल इट हाई यील्डिंग वैरायटी. यही वो वैरायटी है जो ग्रीन रिवोल्यूशन के वक्त यूज हुआ. ग्रीन रिवोल्यूशन. ओके, so at the time of green revolution we use that only. Okay, then chemical fertilizers, insecticide, pesticides, ये सब हम यूज करते हैं इसके अंदर. किसके अंदर? कमर्शियल फार्मिंग
फार्मिंग में। कमर्शियल फार्मिंग में फार्मर के पास पैसा बहुत रहता है, तो वो जितने सारे चीजें, मशीन्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, HYVs, ये सब यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेता है, तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द हायर प्रोडक्टिविटी। ओके, दैट इज द ओनली पर्पस, टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, that is the main motto. The degree of commercialization of the agriculture varies from region to region. Okay, इसी पे इतना सारा क्वेश्चन आ सकता है। देन थर्ड टाइप इज प्लांटेशन। हमने तीन चीजें देखो, एक तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर देखा, दूसरा देखा हमने कमर्शियल एग्रीकल्चर, तीसरा देखा प्लांटेशन। प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, इसी के अंदर का एक टाइप है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज वेयर द सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज एरिया। इसका क्या मतलब होता है, आपके पास 10 एकड़ 20 एकड़ की जमीन है, ओके, एंड यू आर टेकिंग द सेम क्रॉप इन ऑल द एरियाज, उसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। द प्लांटेशन cover large tracts of land using capital intensive input। capital intensive inputs मतलब उसके अंदर बहुत पैसा हम खर्च करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी और जगह से हम लेबरर्स को भी बुलाते हैं। लेबर दो टाइप के रहते हैं, एक तो लोकल लेबर्स, जो जिस गांव में खेती हो रही है उसी गांव में कुछ औरतें रहते हैं जो जाके खेती करते हैं, दैट इज द लोकल लेबर। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर टाइम कम रहा और ज्यादा काम है तो आप क्या करते हो, किसी और स्टेट से भी लेबर्स लेके आते हो। ये जनरली होता है ना शुगर केन में। शुगर केन अगर आपके पास है, गन्ना जिसको बोलते हैं, आपको गन्ना काटना है तो आप क्या करते हो, बहुत बार आ, वो गन्ने को काट कर फैक्ट्री में ले जाना होता है, तो गांव के लोग नहीं कर पाते, तो बहुत बार ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे स्टेट से भी लोग बुलाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द माइग्रेंट लेबरर्स। ओके, इन इंडिया ये क्वेश्चन आता है, देखो, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। देखो क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से। प्लांटेशन क्रॉप आ गया, प्लांटेशन क्रॉप, राइट। तो हम लोग देखते हैं, ओके। सो since the production is mainly for the market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas। आप कमर्शियल या प्लांटेशन जहाँ होता है तो वहां पर बहुत अच्छे रोड्स देखेंगे, क्योंकि वहां से जो प्रोडक्शन हुआ रहता है वो आपको फैक्ट्री में ले जाना पड़ता है, तो इसके लिए वहां की रोड्स भी अच्छे ही रहते हैं, एटलीस्ट मार्केट के आसपास। अब थोड़ा सा आते हैं हम, चीजें पढ़ते हैं सीजन्स के बारे में। याद रखो 3 सीजन है हमारे, खरीफ, जैद और व्हाट, राबी। सो आप याद रखो, खरीफ, खरीफ होता है मानसून के वक्त, याद रखना, सिंपल। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कुछ, देखो आपको याद रहता है कि देखो, आई विल टेल यू समथिंग नाउ। आपके पास 3 सीजन है, ठीक है। एक है खरीफ, दूसरा है राबी, तीसरा है जैद। ओके, अब खरीफ के अंदर होता क्या है, अब खरीफ के अंदर देखो एक चीज होती है, ग्राउंड क्लियर कब करते हैं, सॉइल क्लियरिंग, ये करते हैं लेट अस से मई में, और सीड सोविंग ये करते हैं जून में, उसकी हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग करते हैं नवंबर दिसंबर। देखो मैंने क्या बोला, अच्छे से याद कर लो। मैंने बोला इमेजिन करो आपको लगाना है राइस, ओके। तो बारिश आने से पहले, बारिश कब आती है इंडिया में, मानसून में। मानसून कब स्टार्ट होता है, जून में, राइट। जून में बारिश आती है मानसून से, जून 15 तक, जून 10 तक बारिश आ जाती है। तो जब बारिश आने से पहले तुम लगाएंगे ना, क्या बारिश आने के बाद लगाएंगे,
बारिश आने से पहले आप कुछ चीजें लगाते हो, फिर बारिश आने के बाद वो चीजें उग करके बाहर आती है, राइट। ओके, एग्जाम्पल आपने किया राइस का, कॉटन भी हो सकता है, जूट भी हो सकता है, मेज भी हो सकता है। ओके, लास्ट में जहां जहां ई आ रहा है ये सब सट्टा है, याद रख सकते हो। खरीफ क्रॉप, तो मैंने बोला कि ये सीड आप जमीन में लगाएंगे कब? जून में, बारिश आने से थोड़ा पहले। और उसको हार्वेस्टिंग कब करेंगे? 6 महीने के बाद, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। 6 महीने के बाद आपका जो वीट है या राइस है या कॉटन है, मेज है, जूट है, ये क्या हो जाएगा? ये आप उसको हार्वेस्टिंग करेंगे, उसको कट करके ले जाएंगे मार्केट में, ठीक है। दिस इज द खरीफ। ये जनरली मानसून में होता है। ओके, रिमेम्बर दिस, इट इज इन द मानसून, ये भूलना नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, रबी की बात करता हूँ। ओके, राबी। तो राबी सीड सोविंग कब होती है? ये होती है ये खत्म होने के बाद। ओके, दिवाली के पीरियड में, जब दिवाली चलती है ना, देखो दिवाली आती है नवंबर में, राइट, यस और नो। तो उस पीरियड में आप सीड को लगाते हो, नवंबर दिसंबर के आसपास, दिवाली के पीरियड में। और हार्वेस्टिंग चलती है आपकी मार्च में, हार्वेस्टिंग इन दी मार्च अप्रैल। ओके, सो दैट इज, फॉर एग्जांपल व्हीट हो सकता है, एग्जांपल व्हीट का। ओके, तो ये बात समझो। और जैद में क्या होता है? ये दोनों चीजें हो जाने के बाद लास्ट में अगर कोई चीज बच जाती है, ओके, कब? अप्रैल में, बारिश आने से पहले आप ककम्बर, ओके, वाटरमेलन, है ना। आप वाटरमेलन कब खाते हो? धूप के पीरियड में खाते हो ना, जब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है बाहर, तब तो आप वाटरमेलन लेते हो, यस और नो। तब तब उसका चलता है, ये 2 महीने का चीज रहता है, ये बहुत बड़ा कोई सीजन नहीं है। ओके, तो ये, दिस इज हाउ आवर सीजन वर्क्स। ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वट एवर यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन राइट नाउ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स परस्पेक्टिव, दे हैव आस्क्ड वेरियस क्वेश्चंस। ओके, so these three words I was talking about, okay, the rabi, kharif and zaid. I have told you about the rabi and all, I will not repeat that. I have told about the kharif also, okay, and I have told about the zaid also, like watermelon, muskmelon, cucumber, etc. Now I will jump to the crops, the chapter called crops. Now this question was asked about the cotton, and they have also asked about the rice. Okay, you can see here. So they have asked and they can ask questions about the rice, wheat, etc. because it forms the major portion of our diet. Okay, rice, it is the staple. Staple food का मतलब क्या होता है? जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, मेन फूड। Are you getting it? Okay, it is a staple food crop of majority of people in India. Our India is the second largest producer of the rice after China. It is a kharif crop. इसको 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है। आई एम गोइंग फास्ट because I need to cover much points here because there are 2 PDFs and it requires high humidity. इसको सब ज्यादा ही लगता है राइस को, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर। ओके, अगर कहीं पे बारिश कम है तो वहां पे इरिगेशन करना पड़ेगा। अलग अलग टाइप का इरिगेशन होता है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह, ये सब करना पड़ेगा। बगैर पानी के राइस नहीं आता है, राइस को बहुत ज्यादा पानी लगता है। ओके, देखो राइस कल्टीवेशन, इसको पैडी बोलते हैं, राइट। और ये ऐसा होने के बाद आप उसको निकालते हो, सुखाते हो, और सुखाने के बाद मशीन में से राइस बाहर निकलता है। ओके, देखो ये राइस
का एरिया है, कहाँ कहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है. You can see here. Okay, these are the areas, major area. ये पूरा यूपी, बिहार, this whole part, you have production of rice. You need to take the screenshot if possible. Okay, अब देखो कौन सा एरिया है. Okay, next is wheat. राइस को जितना पानी लगता है उससे थोड़ा कम पानी wheat को लगता है. It's almost half. Okay, wheat is the second most important cereal crop. It's main food crop in north and northwestern parts, also in the western part of the country. अब यहाँ पे एनुअल रेनफॉल देखो, राइस के लिए 100 सेंटीमीटर की बारिश लग रही थी, राइट? बट हियर द एनुअल रेनफॉल इज around 50. It's almost half of the rice, so it requires half of the annual rainfall compared to rice. So almost in the areas of Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Haryana, and also some parts of Madhya Pradesh, you will see wheat cultivation. Look at the wheat cultivation. Then we will jump to the millets. Okay, in the millets you have jawar, bajra, ragi. Okay, which are the important millets which are grown in India. Nutrition value is high. Okay, so the question will not be asked about the nutritions because that will form the part of biology, and in that way that can be asked, but not from the agriculture perspective. Jawar actually is mostly in Maharashtra region and Karnataka region. Almost 40% of the jawar production is in Maharashtra. Okay, so if you go north, you will not see much production. Only in Madhya Pradesh and Karnataka and Maharashtra and some parts of Andhra you will see production of jawari. Okay, and another important millet is bajra. Okay, in the sandy soil, remember this word, sandy soil and shallow black soil. It's the black soil you have cotton, but when it is shallow black, okay, which is not that fertile in a way, will have the production of bajra. So jawar and bajra are taken on the soils which are not very much fertile. If the soil is fertile, you will take sugarcane or rice or wheat or something of that sort. Again, this is how bajra looks like. You can see jawar is almost like this. This is how jawar looks like. Okay, if you have seen, but bajra is like this, very small compared to jawari, and it's cheaper also compared to the jawari. Maize again, right? It requires 21 to 27. I'm just going fast. It's a kharif crop. I have shown here. If you look, I have shown it in the kharif, right? This is maize and this is the kharif. So I have shown already in the kharif crop. Okay. India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. This question can be asked. Okay. India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. In the pulses, you have tur, urad, moong, masoor, okay, etc. You can see this is regarding the wheat, and this is the area of green revolution also. Okay. Okay, this is the area of green revolution. So you can see here wheat production. Remember that. Now, the food crops other than grains. Sugarcane is a tropical as well as subtropical
which requires hot and humid climate with the temperature of 21 centigrade to 27 centigrade, and almost it requires the rainfall like rice also. You have in rice, you have almost 100 centimeters rainfall. In sugarcane also, you require 100 centimeters rainfall. And if you have less rainfall, you need to do it with the help of what? With the help of irrigation. India is the second largest producer of sugarcane only after Brazil. After the Brazil, we are second in terms of sugarcane production. Okay. Then oil seeds. Okay. Will not talk much. Tea is important. Yeah. Tea has most of the times asked. I think here also they has asked tea. I don't have that PDF. I will open it sometime afterwards. The tea cultivation, they had asked questions on tea also, NDA. Tea cultivation is an example of plantation agriculture. It is also an important beverage crop because, we use it for drinking, right? That's why it is called as beverage. Okay, like coffee also a beverage because we drink it. Today, most of the tea plantations are owned by Indians. The tea plants grow well in tropical and subtropical climates in the well-drained soil. Remember this. Tea plantation is possible only in the well-drained soils of India. And well-drained is possible on the slopey regions, only if you have slopes. So that's why whenever you will see tea, you can see that in the slope. For example, look, this is the tea cultivation. Okay. This is the tea cultivation. So it is a slope, right? Look at this. This is a hilly area. So it requires the well-drained soil. Isn't it a hilly area? Yes, and look, they are harvesting the tea leaves and they're putting it in the basket. So it requires well-drained, okay, well-drained soil, okay, in the hilly areas. Remember that. I'm talking about the tea, which is a form of plantation agriculture. Okay. Look, India was the third largest producer of tea only after China and Turkey. And the name of Turkey changed, it's Turkey now. Coffee. In 2008, India produced 3.2% of the world's coffee. The Brazilian coffee actually is very famous. Indian coffee is also known in the world for its good quality. Okay. Baba Budan Hill. Baba Budan Hill is famous for coffee cultivation, which is in Kerala. It's in Karnataka. Okay. Baba Budan. Remember this name. Okay. Baba Budan Hills. Then horticulture, what is horticulture? Last time they asked about horticulture, right? So regarding fruits. So whenever you will see the word fruits and vegetables, you can call it as a horticulture. Okay. Now you can see mangoes of Maharashtra, Andhra, Telangana, Uttar Pradesh, West Bengal are famous. Oranges of Nagpur. Nagpur is in Maharashtra only. Okay. Then you have lychee and guava of Uttar Pradesh.
Lychee is famous in Uttar Pradesh. Okay. Then pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra, Telangana, and Maharashtra, apple, pears, apricot, walnuts of Jammu and Kashmir, and apple of Himachal Pradesh, etc. Famous. Okay. Non-food crop. Again, rubber is important from exams perspective. It is an equatorial crop. Remember that. It is an equatorial crop. It requires high rainfall and high temperature. That is called as equatorial crop. But under special condition, it can be grown in the tropical as well as subtropical areas. Look, if I draw a map of India, if I draw like this, so you know that here you have tropic of equator, equator. Okay, this is the equator 0 degree. So you know that only in this region of what? Of the Kerala can rubber be taken. So that's why Tamil Nadu and Kerala are famous. So Kerala is very famous in terms of what? Rubber, because it is the equatorial crop. Na? This is the equator and this is near to equator. That is why it is in Kerala. Remember that. It is an equatorial crop, but under certain conditions it can be taken in the subtropical region. Okay. Next is cotton, and this was the question which was asked. Cotton. India is believed to be the original homeland of cotton plant. So initially, we have given the world cotton. Okay, cotton is one of the main raw materials. We know that, and I don't think they will ask the question. We are interested only the things which can be asked in exam. Now, jute, it is called as the. Now, one thing which is missing, which I missed in the cotton, is that cotton requires 210 days of frost free. Okay, 210 days. Okay, it should be frost free, because otherwise cotton will become black. Okay, it will get blackish. Okay, so it requires 20. Yes, it is. That question was asked. Regur. Okay, jute is known as the golden fiber. You know that. All you see that kind of bags, na? The bags and जिसको हम थैली, बहुत बड़े बड़े थैली जिसको बोलते हैं, जो मार्केट में रहते हैं, जिसमें 100 kg 200 kg का व्हीट और राइस रखा हुआ रहता है. तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज फ्रॉम द जूट, जो बहुत हार्ड रहता है, जो यूज करते हैं शुगर फैक्ट्रीज में, wheat में, rice mills also. Bangladesh is famous for jute. Okay, and after Bangladesh we are famous. ये सब हमने पढ़ लिया. देखो, एग्रीकल्चर provides employment for the 60%. Okay, livelihood मतलब employment. Livelihood means employment to almost 60% of the population. Okay. और ये वो क्वेश्चन था जो आपके जो एग्जाम आपने दी वो पूछे थे इसके अंदर. उसके पहले मैं आपको ग्रीन रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में बताता हूँ. ऑपरेशन फ्लड, उसी को बोलते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन, विच इज रिलेटेड टू द मिल्क. ओके, समझ में आया? व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, yellow revolution is related to oil, blue revolution is related to marine, pink revolution is related to meat. Okay, yellow is also related to oil seeds, and then you have such kind of revolutions. Okay, and now this is the thing I have told you.
that they had asked about. If you open your previous question paper, you can see that Bhudan movement. They had asked about Vinoba Bhave, right? This was the name which was asked, and I have told you when I was there in Hyderabad, I told you that this was the question. So that's why I tell, and I keep on telling that you should refer to the NCERT rather than other books. So this is Gramdan, and this is the, I think, is that name? I don't know the name. Here is the Pochampalli in Andhra. Okay, this is the immediate question which was asked. Okay. I will discuss certain things. Food security, I discussed that. Now remember this, and you can take note of this, that FCI, that is Food Corporation of India, is responsible for procuring, means taking from the farmers, उसको बोलते हैं procure. Farmers से खरीदना, उसको बोलते हैं to procure. Okay. Stocking मतलब रख देना, जमा करना. Okay. और ये PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम राशन बोलते हैं ना, राशन. ओके. जो राशन की दुकान रहती है उसको बोलते हैं पीडीएस. तो ये कौन करता है? सब एफसीआई करता है. तो ये नाम याद रखना, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ओके. ये सब तुमको पता ही है, डिस्कस दैट. वर्ल्ड फूड डे कब रहता है? दी 16th of October. ओके. वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर. चंपारण खेड़ा तो आपको पता ही है, मोमेंट मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, राइट? अब ये देखते हैं 12th क्लास एनसीईआरटी. दिस इज ऑन एग्रीकल्चर. इसको भी थोड़ा सा हम लोग फास्ट में देखते हैं, अगर क्वेश्चन आता है इसको देखेंगे. सिर्फ पहले देखो क्या है, वरना इसको कल देख लेते हैं, कुछ मिनट और 5-10 मिनट, उसके बाद हम एंड करेंगे. हमने एग्रीकल्चर के बारे में तो पढ़ लिया है. और इंडिया में 21% ऑफ द एरिया इज अंडर द फॉरेस्ट. ओके, रिमेम्बर दिस फिगर. 21%. 21% के आसपास एरिया हमारा फॉरेस्ट में है. बैरन लैंड मतलब जिसपे कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, उसको बोलते हैं बैरन लैंड. ग्रेजिंग मतलब जहाँ पे एनिमल्स को चराया जाता है, उसको हम बैरन लैंड बोलते हैं. ये सॉरी, ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं. हाँ. लैंड चेंज, लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया. Land use changes in India to a large extent is influenced by nature of economic activities. किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके रीजन में होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उस टाइप का एग्रीकल्चर क्या रहेगा. साइज ऑफ द इकोनॉमी. अगर आपकी इकोनॉमी अगर अच्छे से ग्रो करती है, आपका जीडीपी अच्छे से ग्रो करता है, तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा भी कर सकती है एग्रीकल्चर के ऊपर. एज अ रिजल्ट, प्रेशर ऑन द लैंड विल इंक्रीज विद द टाइम एंड मार्जिनल लैंड्स वुड बिकम कम अंडर द यूज. अगर आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी की साइज भी बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन कंटिन्यू, यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन,
अगर आपके कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है तो क्या होता है, जो लैंड बैरन लैंड है, जो एग्रीकल्चर के लिए अभी तक यूज नहीं किए, तो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स ला करके उसको एक्सटेंशन एक्टिविटीज बोलते हैं। तो ऐसा लैंड जहाँ पे अभी तक एग्रीकल्चर नहीं हुआ था उसको भी एग्रीकल्चर में ला लेते हैं। ओके, सो हम लोग अपने एग्जाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना देखेंगे। ओके, हाँ, ये तो हमने देखा सीजन्स वाला। ओके, इसमें कुछ देखना नहीं है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे, ये तो फूड ग्रेन्स में सीरियल्स वगैरह देखा हमने। राइस के बारे में भी डिस्कस किया। हाँ, थोड़ा सा ये देख लो, औस, अमन और बोरो, ये राइस को ही बोलते हैं। टाइप ऑफ मतलब सॉइल ही है। फार्मर्स गो थ्री क्रॉप्स ऑफ राइस, अमन, औस और बोरो। ये किसके टाइप, अगर क्वेश्चन आ गया कि औस, अमन एंड बोरो द टर्म्स आर रिलेटेड टू व्हाट, दीज आर रिलेटेड टू राइस, ये वेस्ट बंगाल में लोग बोलते हैं। इतना क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, इन केस अगर आता है तो। सिर्फ हम देख रहे हैं अगर कुछ क्वेश्चन आता है। ये राइस के बारे में दिया है सब, ये देखा भी था हमने राइस का, ये ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में कवर किया है। वीट के बारे में भी देखा था हमने, वीट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जवार के बारे में भी देखा था, ये भी कवर किया है। बाजरा भी देखा है, सिर्फ कुछ अलग मिलता है क्या देखना है। पल्सेस के बारे में भी देखा था। ओके, तूर, ऑयल सीड्स, डन। कि इसमें कुछ है नहीं डिस्कस करने लायक। कॉटन देखा है। एक चीज आप कॉटन के बारे में देख सकते हो, इंडिया ग्रोज बोथ द शॉर्ट स्टेपल कॉटन, जो छोटा हाइट में रहता है ना उसको शॉर्ट स्टेपल कॉटन बोलते हैं, एज वेल एज लॉन्ग स्टेपल कॉटन जिसको नरमा बोलते हैं। ये भी मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछेंगे, इन केस अगर पूछा तो नरमा। जैसा कि अमन्ना औस देखा था वेस्ट बंगाल में, तो नरमा भी है। मैंने बताया था बांग्लादेश में जूट का प्रोडक्शन होता है, राइट। टी के बारे में भी डिस्कस हुआ है, कॉफी के बारे में भी डिस्कशन हो गया। मैंने बताया था अरेबिका, रोबुस्टा, ये सब दीज आर दी वैराइटीज ऑफ कॉफी ओनली। इंडिया में जितनी कॉफी बनती है ना, उसके 2/3 कॉफी तो सिर्फ कर्नाटक से बनती है। मतलब कर्नाटक का बहुत लीडिंग स्टेट है कॉफी के प्रोडक्शन में, याद रखना ये बात। कॉफी मैक्सिमम, वो जो बाबा बुदान मैंने बोला था ना, बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान हिल्स में इंडिया की सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है, याद रखना। तो कर्नाटका कॉफी के मामले में बहुत आगे है, कर्नाटका की कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है। ग्रीन रिवोल्यूशन वी डिस्कस्ड। हाँ, ये क्वेश्चन था, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भी, डिपेंडेंस ऑन मानसून। देखो ये जैसी की वैसी लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, लुक एट दिस लाइन, डिपेंडेंस ऑन मानसून एंड आई एम हाईलाइटिंग आल्सो। ओके, डिपेंडेंस ऑन मानसून। और ये देखो यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंस ऑन मानसून, राइट। जैसी की वैसी लाइन उन्होंने कॉपी किया है। ओके,
लो प्रोडक्टिविटी भी है। इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका में जितना प्रोडक्शन होता है हमारे पास उतना प्रोडक्शन नहीं होता सेम लैंड में। महलवारी, रैयतवारी, जमींदारी आपने पढ़ा रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री में। रैयतवारी, महलवारी एंड जमींदारी, ये तीन चीजें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई थिंक यू शुड नो। ये तीन वर्ड आप जाके पढ़ लेना इसके बारे में, कौन सा गवर्नर जनरल था, कब था, है ना, आता है। ठीक है, चलेगा। You will stop it here. If you have questions, you can ask. Otherwise, I will end. Okay. If you have any questions, you can unmute and ask.